Assalamu alaikum. In this video, I'm going to describe you how to find an angle of a regular polygon, how to find the sum of angles of all the polygon, how to find an exterior angle of a regular polygon, and some basic angle properties related to alternate angle, corresponding angle, vertically opposite angle, sum of interior angle. Now, first of all, I'm going to describe you what is mean by polygon. Polygon means a closed shape. What is mean by polygon? A closed shape, like a triangle which is having, it's a closed shape which is having three number of sides like this. It's a closed shape which is having three number of sides. Then a quadrilateral is also a polygon which is having four number of sides. It seems like a rectangle, a square, a trapezium, a parallelogram, a kite, and then a pentagon. Pentagon is also a quadrilateral. Pentagon is also a polygon which is having five number of sides. Then a hexagon. Why I am writing the name of these polygons? Because in some question examiner will ask you find an interior angle of a regular hexagon or regular octagon or regular nonagon. तो आपको इनके नंबर ऑफ साइड्स पता होने चाहिए. देन हेप्टागन नंबर ऑफ साइड 7, octagon number of side 8, nonagon number of side 9, and the last decagon number of side 10. Okay, so these are the name of some quadrilateral or some polygons. इसके अलावा अगर कोई शेप्स होंगी, कोई पॉलीगॉन होगा, तो उसमें नंबर ऑफ साइड्स आपको एग्जामिनर बता देगा. Now I am going to describe you what is the formula for finding out the sum of all angles of a polygon. The formula for finding out the sum of all angles of a polygon is n minus 2 into 180. This is the formula for finding out sum of all angles of a polygon. For example, the sum of all angles in a triangle, is equals to 180. तो अगर इसको हमें चेक करना हो, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ट्राइंगल के एंगल का सम जो होता है वो 180 होता है. तो रिप्लेस n by 3 because triangle is having three number of sides, minus 2 into 180. It becomes 1 into 180. So their sum is 180. For example, if examiner is asking you find the sum of all angle of an octagon, अगर octagon के बारे में बात करता है उसका सारे एंगल का सम निकालना है, same formula n minus 2 into 180. What you will have to do? Octagon means having number of side 8. So replace n by 8. 8 minus 2 into 180. 6 into 180. 180 into 6. 600. 6 8 is 48. 6 1080. So an octagon having sum 1080. उसके तमाम एंगल्स का जो सम होगा it will be 1080. अब आता है कि इसके क्वेश्चन किस तरह से आते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर इसी तरह का एक कोई क्वेश्चन मैं आपको डिस्क्राइब करूं कि क्वेश्चन किस तरह से आते हैं इसके. लेट्स से फॉर एग्जाम्पल a pentagon is given to you. This is a pentagon. Whose angles are
For example, a pentagon A, B, C, D, E. They're asking to find the angle X, or they're asking to find the angle EAB या BAE. तो अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई इट्स अ पेंटागन, 5 साइड से 1 2 3 4 5, इस पेंटागन के सारे एंगल्स का सम कितना होता है. जिस तरह से अगर ट्राइंगल के दो एंगल गिवन होते हैं तो हम दोनों को प्लस करते हैं और 180 से माइनस कर देते हैं. क्यों? क्योंकि हमें पता होता है कि द सम ऑफ द ट्राइंगल, सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180. तो इसी तरह से आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ पेंटागन. तो इसका सम निकालने अगर याद नहीं है तो फॉर्मूला इज n-2 into 180. n means pentagon means 5, having 5 number of sides, so n will replace by 5 into 180. It will be 18 3 the 54 540. It means sum of all angles of a pentagon is equals to 540. अब इसका एंगल फाइंड आउट करना है BAE. ये कैसे फाइंड आउट होगा? अब इन सबको प्लस करो. x plus 120 plus 80 plus 70 plus 170 is equals to 540. अब इनको ऐड करते हैं. So 120 80 200 270 270 plus 170 077 14, it will be 540. It will be 440, sorry. So 120 plus 80 plus 70 plus 170, it will be 440. Sum of all 5 angle is equal to 540. 440 इधर प्लस का है. After changing its position, इसका साइन हो जाएगा माइनस का. So it will be equal to 540 minus 440, it will be equal to 100. So this is the way to find out the value of x. तो ये sum of all angles से related मैंने आपको एक एग्जांपल दी. Now, how to find an interior angle? How to find an interior angle of a regular polygon? How to find an interior angle of a regular polygon. So the first thing you have to understand what's mean by regular polygon and interior angle. For example, मैं एक जनरल एग्जांपल देता हूँ. For example, it's an equilateral triangle. These three are said to be interior angle of a triangle, and the outer one is said to be exterior angle. The outer one is said to be exterior angle. Sum of interior and exterior. Sum of interior and exterior is equal to 180. हमेशा इंटीरियर और एक्सटीरियर का सम 180 होता है. तो हम एक्सटीरियर के बारे में डिस्कस करेंगे. पहले हम इंटीरियर पे आ जाते हैं. हाउ टू फाइंड एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन. रेगुलर पॉलीगॉन मींस whose all angles are congruent, एक जैसे हों, और जिसके तमाम साइड्स भी एक दूसरे के जैसे हों, सेम हो. ठीक है. अच्छा जी, द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन एंड इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज n-2 into 180. ये तो सम ऑफ एंगल का हो गया था. अब क्योंकि सारे एंगल्स एक जैसे हैं बिकॉज ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, तो इसके जितने साइड्स हैं उससे डिवाइड कर दो. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन. नाउ
Let me discuss one example. Question है find an interior angle of regular octagon. If it's regular तो समझ में आ गया भाई, octagon is a polygon क्योंकि क्लोज शेप है, और रेगुलर है उसके मतलब सारे साइड से इसके एक जैसे होंगे. So octagon means which is having 8 number of sides. A polygon which is having 8 number of sides. So replace it in the formula. N will replace by 8 minus 2 into 180 over n will replace by 8. Now solve it. 6 into 180 over 8. 2 3s are 2 4s are 4 1s are 4 4s are 16, remaining to 20, 4 5 30. 45 3s are 135. So an interior angle of a regular octagon is equals to 135. Now same इसी तरह से हम exterior angle निकालना सीखते हैं. How to find an exterior angle of a regular polygon, and how to find an exterior angle of a regular polygon. अब ये देखिए, और उसके साथ साथ हम ये भी प्रूव करेंगे कि इंटीरियर और एक्सटीरियर का सम 180 होता है. तो the formula for finding out an exterior angle of a regular polygon is 360 divided by n. The formula for finding out an exterior angle of a regular polygon is 360 divided by n. For example, we have to find, इसी एक octagon का ही क्वेश्चन देता हूं मैं आपको. अगर एग्जामिनर पूछे find an exterior angle of a regular octagon, अगर एग्जामिनर पूछे एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करें किसी रेगुलर ऑक्टागन का, तो इसका फॉर्मूला है 360 upon n. If it's octagon, so it means it's having 8 side, 8 1s are 8 4s are 32, remaining 4 40, 8 5s are 40. So answer is 45 degree. So exterior angle of a regular octagon is equal to 45 degree. Now according to this condition which I have discussed with you के interior और exterior का sum हमेशा 180 होता है. तो look at the interior and the exterior angle. This one is the interior angle of an octagon and this is an exterior angle of an octagon. So interior plus exterior, 135 is an interior angle and 45 is an exterior angle. Their sum is equals to 180. So it's proof that the sum of interior and exterior angle is equals to 180 degree. Now one more thing, sum of all exterior angle. जैसे for example अब ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल था. तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो इंटीरियर एंगल होते हैं वो 60 60 60 होते हैं और एक्सटीरियर होता है 120 120 120. So one thing is constant, that the sum of all exterior angle is always 360. The sum of all exterior angle of a polygon is equals to 360. The sum of all exterior angle of a polygon is equals to 360. Okay. Now अब इसके किसी पास्ट पेपर के क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि पास्ट पेपर में इसकी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी वैसे पास्ट पेपर की ही थे, लेकिन फिर भी हम और भी क्वेश्चन देखते हैं पास्ट पेपर के. इसके क्वेश्चन
मई जून 17 पेपर 1-2 question number 19. The question is a pentagon has four angles. It's not a regular pentagon, it's just a pentagon, a five-sided shape. A pentagon has four angles of 2x and one angle of x. Calculate the value of x. Calculate the value of x. अच्छा जी, एक ये क्वेश्चन आ गया फर्स्ट पेपर का। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, वो भी हम डिस्कस करते हैं। नाउ पेंटागन मींस, पेंटागन के नाम आते ही हमें अंदाजा हो गया कि इट्स अ फाइव साइडेड शेप। तो पेंटागन के एंगल का सम कितना होगा? n-2 माने 5 - 2 × 180। इससे पहले भी डिस्कस किया था, 3 × 180। So it means sum of all angle of a pentagon is 540. 183 is 54 और 0 का 0 5। इसका मतलब है जो पांचों एंगल है उसका जो सम होगा वो क्या होगा? 540 होगा। ठीक है। अब पेंटागन की जो चार एंगल है, जो फोर एंगल है, वो है 2x 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 एंड 2x। या तो इसको ऐसे लिखते हैं या इसको ऐसे लिखते हैं, 4 × 2x। इट्स अप टू यू। एंड जो पांचवा एंगल है इज x। देयर सम इज इक्वल्स टू 540। Now, how to get the value of x? 4x, 6x, 8x, 9x is equal to 540. X will be equal to 540 over 9. 9 ones are 9 6 are 54. 0 का 0. So the value of x is 16. So this is a part of question number 5. मैं जिनका जो क्वेश्चन है इसका a part है क्वेश्चन नंबर 19 का। अच्छा जी, now I am describing you the B part of this question. Hope you will understand the question. You have understand the question. Now the second part is diagram आपके पास given है। क्वेश्चन पे रीड कर रहा हूं। ए बी सी डी एंड ई बी सी एफ ऊपर वाला शेप और ई बी सी एफ नीचे वाला शेप आर पार्ट्स ऑफ टू आइडेंटिकल रेगुलर एन साइडेड पॉलीगॉन। ये जो है लिख देता हूं ताकि समझ में आ जाए। ए बी सी एफ, ए बी सी डी एंड EBCF are parts of two regular identical n-sided polygon of two identical regular n-sided polygon। ठीक है। Now they are asking to find the value of n. They are asking to find the value of n. In this question, what people have to do? पहले तो हमने ये देखा कि क्वेश्चन में मेंशन है कि ये दोनों जो है ऊपर वाली शेप और नीचे वाली शेप जो है, these are the two identical polygon। ये जो दोनों हैं आइडेंटिकल हैं और रेगुलर भी हैं। और इसका एक एंगल यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है वो है 30। जो एंगल गिवन है वो क्या है इसका? 30। ठीक है। अगर एक एंगल इसका 30 है तो दोनों शेप आइडेंटिकल है, तो दोनों के एक्सटीरियर एंगल भी सेम होंगे 15-15। बाय, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल 30 है पूरा, हाफ एक्सटीरियर एंगल यहाँ जाएगा, हाफ एक्सटीरियर एंगल यहाँ आएगा। दूसरा तरीका अगर इस तरह से समझ में ना आए, अगर ये 30 है तो ये कितना होगा? एंगल एट अ पॉइंट देयर सम इज इक्वल टू 360। तो ये पूरा होगा 330
जब 330 को मैं इन दो हिस्सों में डिवाइड करूंगा सो इट बिकम 165 एंड 165। ये 165 हो गया आपका इंटीरियर एंगल यहाँ से यहाँ तक, और ये 165 हो गया यहाँ से, क्योंकि रेगुलर है, दोनों एंगल सेम होंगे। ठीक है, 165 अगर ये 165 है इंटीरियर तो एक्सटीरियर 15 होगा। अगेन ये भी बात प्रूव हो गई दोनों कंडीशन में। ठीक है, नाउ दे आर आस्किंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, एन साइडेड पॉलीगॉन बताया है, एन साइडेड पॉलीगॉन बताया, दे आर आस्किंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। तो एन की वैल्यू कैसे पता चलेगी आपको? अब आपको इंटीरियर भी पता है, एक्सटीरियर भी पता है, तो आप इंटीरियर एंगल के थ्रू भी एन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो और एक्सटीरियर एंगल के थ्रू भी एन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। एक्सटीरियर एंगल के थ्रू फाइंड आउट करता हूँ, आसान है, एन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 360 ओवर एन। एक्सटीरियर एंगल हमारे पास कितना गिवन है? 15। 360 ओवर एन, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, एन इज इक्वल टू 360 ओवर 15। सो 15 1 जा, 15 2 जा, 30, रिमेनिंग 660, 15 4 जा, सो एन इज इक्वल टू 24। दिस इज द पॉलीगॉन ABCD, जो जिसका जो पार्ट है ये, इसके अंदर टोटल 24 साइड्स हैं। ये मैंने इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल के थ्रू सिखाया, अब इसी को मैं इंटीरियर एंगल के थ्रू भी सिखाता हूँ। आपने कोई भी एक पार्ट एक तरीके से करना है, मैं आपको दोनों तरीके से सिखा रहा हूँ। अगर इसी को हम इंटीरियर एंगल के थ्रू करते तो एन कैसे निकलता है? एन इंटीरियर एंगल of a regular polygon, and we are talking about the regular polygon. An interior angle of a regular polygon is n minus 2 into 180 upon n. इंटीरियर एंगल हमारे पास गिवन है 165, n हमें मालूम करना है, 180 n से मल्टीप्लाई होगा 180 n, 182 से मल्टीप्लाई होगा 360 अपॉन में n। ओके, n इज डिवाइडिंग ओवर हियर, इट विल बी मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 165 n, 165 n is equals to 18 n, 180 n, sorry, 180 into n, wait, 180 n, 180 n minus 360। अच्छा जी, 360 इधर आके प्लस 360 हो जाएगा, और 180 n 165 इधर आके माइनस 165 n हो जाएगा। 180 माइनस 165, इट विल बी 15n, 15n इज इक्वल टू 360, अगेन सेम कंडीशन आ गई, सो n इज इक्वल टू 360 अपॉन 15, n इज इक्वल टू 24। तो चाहे आप इसको एक्सटीरियर एंगल के थ्रू निकालो या इंटीरियर एंगल के थ्रू निकालो, दोनों कंडीशन में आपका आंसर सेम आएगा। तो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया हाउ टू find an interior angle, how to find an exterior angle, how to find sum of all angles। ठीक है, in my next video we will discuss के alternate angles क्या होते हैं, corresponding angles क्या होते हैं, और कुछ past paper के questions और हम discuss करेंगे next video में। Thank you very much। अस्सलाम वालेकुम।